Greetings and good afternoon. I am Research Associate Rabia Anwaar at the Center for Law and Security. And on behalf of Center, I warmly welcome my esteemed guests at the webinar series, which is now a regular feature of the Center. Today, the topic under discussion is the one on which all eyes are placed, which is the upcoming SCO Summit and the troubled India-Pakistan bilateral relationship. Now, why the SCO Summit 2024, which is destined to be hosted by Pakistan on October 15 and 16, is significant in the eyes of Asian leaders? To have an insightful discussion, we have two distinguished guests with us, a very relevant to this topic, Ambassador Ashraf Jehangir Qazi, who has been former High Commissioner to India and who has also served as an ambassador to Russia and China. And Dr. Shabana Fayaz will be joining us later. And we will also be, the session will be moderated by our Executive Director, Mr. Rehman Azhar. Thank you very much for joining us, sir. So without further delay, sir, my first question will be directed at you, Ambassador Saab. Sir, why this SCO Summit is considered to be a significant one, and does India-Pakistan poor bilateral relationship is potent enough to overshadow the mettle of this summit? Thank you very much, Rabia Saiba. It's very kind of you to have invited me to this important discussion. The SCO is arguably the world's largest regional association, and it comprises countries from Europe to Asia to the Middle East, Central Asia, South Asia, the Far East, Southeast Asia. So it encompasses almost half the world's population, and I understand more than a quarter of the world's GDP. So it is obviously an extremely important organization. It is also an initiative essentially of China and also of Russia in order to form an alternative approach to international relations than the US-led one, which is essentially based on the hegemony of one superpower over the rest of the world. It's not always admitted, but that is the recognized assumption of the US-led international order. They feel that unless the US leads it, there can't be peace and stability. Whereas China believes that you have to have a shared approach towards development, a shared approach towards stability, a shared approach towards improving the life of the people of the world. Secondly, this is an Asia-centered regional organization, and Pakistan is an Asian country, and therefore it is appropriate for Pakistan to be part of this extremely important Asia-based international regional organization, multi-regional organization. So for all these reasons, it's extremely important for Pakistan to be, and Pakistan is a very important member of this group, along with the primary members, you can say China and Russia, and then of course there's India and Pakistan. So we can exercise a degree of leadership in this organization of our problems at home. Right. Achha, Ambassador Sahab, one thing, this is indeed remarkable, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के context में, heads of government के यहाँ पर meeting is very significant. But बहुत से लोग इसको compare कर रहे हैं with platforms like SAARC, जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया की जो rivalry है, उसने इसको किसी हद तक dysfunctional कर दिया है, या फिर वो किसी भी जो multilateral forum है, उसकी outcome को जो है वो impact करता है. Do you think SCO का इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप का कंपैरिजन बनता है सार्क के प्लेटफॉर्म के साथ? एक महदूद हद तक इसका कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं वो सार्क के लिए बहुत अहम हैं. सार्क तो तकरीबन फेल हो चुका है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल
वो जीरो तक पहुंच गए। लेकिन वो उसका वो असर नहीं है एससीओ में, क्योंकि एससीओ में जिस तरह मैंने अर्ज किया है बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हैं, यूरोपियन ममालिक से लेके फार ईस्ट तक, चीन जैसे और रूस जैसे ममालिक। तो उसमें जो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का जो किरदार है अहम तो है, लेकिन बिल्कुल इस कदर नहीं जिस तरह के वो सार्क के रीजन में अहम है। अच्छा, और एक और क्वेश्चन जो इंडिया से रिलेटेड है, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अनलाइकली टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो इंडियन रिस्पॉन्स है अभी तक उसको आप किस तरह से देखते हैं? इफ जयशंकर कम्स है और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट, तो जारी बात है मोस्ट लाइकली जो है वो करेगा, तो डू यू सी सम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द इंडियन साइड, या इंडिया इस प्लेटफॉर्म को जो है वो अपना जो पॉलिटिक्स है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विल दे ट्राई टू मेक इट अबाउट दैट? उनके जो रवायती मौक़िफ़ है वो तो उसको दोहराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कंट्री है तो कुछ तकाजे हैं पोलाइटनेस के वगैरह वगैरह। लेकिन इस ज़मन में मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मोदी का आना जो है अब तक वाजे नहीं है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये जयशंकर ने खुद कहा कि ये किसने कहा है कि मोदी साहब नहीं आएंगे, किसने कहा कि वो आएंगे, अब तक फैसला हुआ नहीं है। तो ये मुमकिन है कि मोदी जो हैं वो ये समझें कि आने में शायद इंडिया के लिए कोई एडवांटेज हो, क्योंकि आपको इल्म है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो वो आए, लाहौर आए थे, वो सरप्राइज विजिट जो था वो लाहौर सरप्राइज विजिट पे आए थे, और उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया था उस इनिशिएटिव में। तो ये मुमकिनात में है कि ये देखते हुए, क्योंकि अब तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, तो हो सकता है कि ये कैलकुलेट करें कि भाई उसी रिलेशनशिप को फिर से बहाल करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। और वो समझेंगे कि भाई अगर वो आएंगे, वो मौक़िफ़ तो अपने नहीं बदलेंगे, लेकिन अगस्त 5 2019 के बाद अगर पाकिस्तान के साथ कोई पेशकदमी होती है रिलेशनशिप में तो इंडिया उसको अपनी जीत समझेगी, तो समझेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी भी मैं गुड 25% चांस है कि मोदी आ जाएंगे। 75% है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन 25% तो जो डायलॉग की रिजम्पशन है उसकी पॉसिबिलिटी आप क्या देखते हैं? क्योंकि हमने आमतौर पे देखा कि जो मीटिंग्स बायलैटरल वैसे नहीं हो सकती, वो किसी मल्टीलैटरल फोरम की साइडलाइन के ऊपर मीटिंग हो जाती है, एंड देन थोड़ी सी आइस ब्रेक होती है मुल्कों के दरमियान। सो डू यू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग? वेल यू सी अगेन, अगर जयशंकर आते हैं इन प्लेस ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर तो वो अपने मतलब वो जो रवायती मौक़िफ़ वो दोहराएंगे। हो सकता है विद लिटिल पोलाइटनेस, क्योंकि पाकिस्तान इज द होस्ट कंट्री, लेकिन बहुत बड़ी चेंज नजर नहीं आती, कोई चेंज ज्यादा नहीं। अगर मोदी आ जाते हैं तो ये ऐन मुमकिन है कि उनकी ये कोशिश होगी कि भाई जरा पेशरफ्त हो, इसमें इंडिया का फायदा है और इंडिया के ऊपर भी प्रेशर कम होगा कश्मीर के हवाले से। तो उनके तो अगर वो आते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक जीत नहीं, एक कामयाबी है तो जरूर। और तो उसमें हो सकता है कि इन्होंने साथ साथ फिर ये सोचा होगा कि अगर मैं आता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ वो अच्छे एटमॉस्फेयर में बातचीत होती है तो हो सकता है कि वो टॉक्स जो हैं भी बहाल हो, लेकिन वो कश्मीर के हवाले से अपने मौक़िफ़ को बिल्कुल बरकरार रखे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, न पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आएगी। लेकिन एक दफ़ा डायलॉग अगर शुरू हो जाता है, और पाकिस्तान डायलॉग के खिलाफ नहीं है, अब तक तो इंडिया ही खिलाफ रहा है कि जब तक पाकिस्तान ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, दहशतगर्दी नहीं रोकेगा वगैरह वगैरह। अगर मोदी साहब आ जाते हैं तो वो तो इस मौक़िफ़ में कुछ वो लचक लाने की गालिबन कोशिश करेंगे, तो उसमें फिर वो टॉक्स के बहाल होने में
वो इम्कानात बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे दरमियान मसाइल हैं खासतौर कश्मीर पे वो किसी आसान हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मौक़िफ़ तो रहेंगे, लेकिन एक दफ़ा डायलॉग शुरू हो जाता है तो उसकी डायनामिक्स होती है, उसका फीडबैक होता है इन द रिलेशनशिप, तो फिर वो पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इम्प्रूवमेंट। और आगे जाके फिर आप सोच सकते हैं कि कश्मीर के हवाले से क्या क्या मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया को तो पता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, हमें मालूम है कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है, पहले भी हमारे बातचीत होती रही है। और आगे जाके अगर कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन होना है तो आप अपने प्रिंसिपल्ड मौक़िफ़ पे रहते हुए कॉम्प्रोमाइज की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि आप उसको तब्दील करेंगे तो पहले से आपने बाजी दे दी होगी उनको। कई लोग कहते हैं कि अभी यूएन रेजोल्यूशंस इरेलेवेंट हो गया, यूएन रेजोल्यूशंस बिल्कुल रेलेवेंट है, यूएन रेजोल्यूशंस इंटरनेशनल लॉ है, यूएन रेजोल्यूशंस पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बुनियाद है। अगर आगे जाके आप उनसे हट जाएंगे, आगे जाके जब कश्मीर का ऐसा सेटलमेंट मुमकिन हो जाएगा जो कश्मीरी अवाम को काबिल कबूल हो, तो फिर आप इस पे सोच सकते हैं और एक नया यूएन रेजोल्यूशन के जरिए आप उसका वो सेटलमेंट ऑन अ लीगल बेसिस करवा सकते हैं। लेकिन पहले से अगर आप कंसीड करें, हाँ भाई अभी वो यूएन रेजोल्यूशन को छोड़ें और वगैरह वगैरह, जिस तरह हम करते रहें, क्योंकि आपके जो इंचार्ज रहे उनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई ज्यादा पता ही नहीं है। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन बिफोर आई गिव द फ्लोर टू राबिया, आई थिंक शी वांट्स टू आस्क समथिंग। इसमें चाइना और रशिया, सिंस दे आर द लीडर्स ऑफ एससीओ, डू यू थिंक दे कैन हैव एनी रोल बिटवीन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली तो हम देखते हैं कि बाहर से कोई आता है, हमें बिठा देता है, बट उसकी भी डायनामिक्स अब चेंज हो गई। लेकिन अगर एससीओ जैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चाइना और रशिया इस प्लेटफॉर्म को लीड करते हैं, तो डू यू थिंक वो इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, इस डायलॉग को, इस जो डेडलॉक है उसको तोड़ने के लिए? उस तोड़ने के लिए देखें जी, टू बी वेरी ब्लंट, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियानी जो डायनामिक्स है उसी पे इसका सारा इन्हिसार है। ना चाइना रोल प्ले कर सकता है ज्यादा और रशिया तो उससे कम, और अमेरिका को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को अपना तकरीबन नॉन नेटो एलाई समझता है और वो हिंदुस्तान को अपनाना चाहता है अगेंस्ट चाइना एंड सेकेंडरीली अगेंस्ट रशिया। तो उनका रोल निस्बतन कम ही होगा टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट और टू इम्प्रूव इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। दिस हैज टू बी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसको बदलने के लिए पाकिस्तान itself has to improve its image in the world, ताकि हमारा जो मौक़िफ़ है, जो सही मौक़िफ़ है और इंटरनेशनल लॉ और मोरालिटी पर मबनी है और जस्टिस पर मबनी है, उसकी सुनवाई हो दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान का अगर अपना इमेज नेगेटिव हो या कमज़ोर हो, तो चाहे हमारा मौक़िफ़ जितना भी सही हो, उसकी सुनवाई कम होगी या नहीं होगी। So Pakistan has to improve its image through better governance, through better economic performance, through doing all the things which increase the impact of your view. Pakistan क्योंकि 25 करोड़ का मुल्क है, कोई छोटा मुल्क तो नहीं है। पाकिस्तान जियोलॉजिकली, जियोपोलिटिकली, जियोस्ट्रेटेजिकली बहुत क्रूशली लोकेटेड है। लेकिन खुदा न खास्ता पाकिस्तान को अगर फेलिंग मुल्क समझा जाए तो उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी पर हो ही नहीं सकेगी। राइट। सर, जैसे कि आपने भी पहले मेंशन किया कि इंडिया पाकिस्तान हैव ऑलमोस्ट फेल्ड द रीजनल प्लेटफॉर्म सार्क, ठीक है सर? तो सर, कैन यू प्लीज एनलाइट अस ऑन दिस, that how much useful this platform SCO have been in the past or could be useful in future for normalizing India-Pakistan bilateral relationship, especially in terms of promoting regional trade? Regional trade, yes. The SCO is, of course, based on connectivity. Yes. And as I mentioned beforehand, it's the world's largest, regional organization, world's largest trading organization. Its GDP is almost half the world's GDP, all its countries, etc. So from a point of view of connectivity, the SCO is an extremely important organization, but still its dependence on India-Pakistan relations is relatively less.
And as far as resolving the problems between India and Pakistan, primarily the Kashmir dispute, the SCO is not going to play a crucial role, although it could have an influence. My point here has been, which I was explaining to Rehman Sahab, that Pakistan has to improve its image so that its point of view is taken seriously by the international community. Now, India and Pakistan are nuclear weapons countries. Kashmir dispute has led to wars in the past. The Kashmir dispute involves the violation of international law, international human rights of the Kashmiri people. So Pakistan's point of view is a very strong and reasonable point of view. The only reason the world doesn't listen to us is because India is a very important country, and because Pakistan does not seem to be fulfilling its potential. If we begin to fulfill our potential, then Pakistan's point of view will begin to be listened to as seriously as the Indian point of view. And if, as I said, India-Pakistan relations improve, it is possible that India might bring about some flexibility in its position. I didn't say it'll change its position, but in the past there have been proposals which could be revived, such as the 4-point proposal in the time of President Musharraf. That could lead conceivably to a compromise solution acceptable to the Kashmiri people, and the people of Kashmir would have to accept any agreement for it to be acceptable to Pakistan. Right. और Ambassador साहब, since आपने mention किया कि SCO is more about connectivity and economic cooperation, how significant do you see this for पाकिस्तान के इस वक्त जो इकोनॉमिक नीड्स हैं और जो हमारे हालात हैं, उसमें ये मीटिंग क्या सिग्निफिकेंट हो सकती है, या इसमें कोई आपको ऐसी चीज नजर आती है that could actually benefit Pakistan? Well, of course, here Pakistan has all kinds of plans to attract foreign investment in order for us to meet our economic targets and to get out of the trap of the IMF. Because once you are caught in the trap of the IMF, you almost never get free unless you take certain measures. Now, our government claims that it's taking measures to free us. But this is the 25th time we have been to the IMF, and we need to completely change our economic approach. We need to completely change our political approach, because ultimately economics follows from the kind of governance you have at home. If the governance is good, it can feed positively into your economic development plans. If your governance is weak, then it also impacts on your economic performance or social performance, your image in the world. All the entire gamut is impacted negatively. So if we get our act together, then the SCO offers enormous opportunities for Pakistan. As you know, under CPEC, we have received more aid from China than the rest of the world put together. And this can increase enormously because the SCO is a brother organization of the overall BRI, the Chinese initiative, both based on connectivity. So Pakistan needs an enormous amount of foreign investment, which will come if the image of Pakistan increases, and if China is seen to be confident of its relationship with Pakistan and investing heavily in infrastructure, and Pakistan benefiting from it, then of course even more investment will come from the other members of the SCO. And of course, as there's a gradual improvement in India-Pakistan relations, if that happens, then of course India-Pakistan trade can also improve, and that can be of great benefit for Pakistan, because inputs for our exports would be much cheaper if you get them from India than if you get them from elsewhere. So your exports can increase. All kinds of benefits can take place, but not at the expense of your fundamental position with respect to issues of juggler, ये शाहरग के जो कश्मीर है जैसे, या उसको तो हमारी एक तरफ उसको अगर principal एक तरफ उसको एक तरफ रखेंगे और शाहरग को भूल जाएंगे, तो जिस शख्स ने अपने शाहरग को भूला तो उसकी क्या जिंदगी होगी? Right. उसके ऊपर सर, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि हम अपनी बेसिक्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हम नहीं साइडलाइन कर सकते, राइट सर? तो फिर हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए भी, या हम अगर इंडिया के साथ डायलॉग करना चाह रहे हैं और बायलैटरली ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो
by utilizing this platform of SCO, how can the antagonism between the two states can be abated, sir? No, I would respectfully say the opposite, that India-Pakistan relations can only be improved bilaterally. Neither the United States, nor China, nor Russia can really bring about themselves a breakthrough in that relationship. That has to be between India and Pakistan. Now, India so far is not interested in Pakistan. It claims we have no interest in talking to Pakistan, no interest in dialogue, no interest in trade, no interest in this, that, and the other. This is partly immature talk, but India, as a big country which is progressing quite successfully, can afford to adopt that attitude. Pakistan's attitude is that if you're not interested, we're even less interested. But Pakistan, as the smaller country, does stand to benefit from trade and investment and interaction with India. It does. But it can only do it on terms acceptable to us. And that means that there should be some kind of Indian review of what happened on August the 5th, 2019. And this has happened in the past. India and Pakistan have always disagreed on Kashmir. We've also gone and had conflict with each other, and yet the dialogue has resumed. So there's no reason why the dialogue can't resume, provided India is able to adopt a more sensible attitude towards Pakistan. And as I said, if Modi comes here, that possibility increases, because he might want to have another feather in his cap कि इन हालात में भी मैंने पाकिस्तान के साथ डायलॉग को बहाल किया और अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखा. So that possibility is there. Thank you very much, sir. Thank you very much for such fruitful discussion. Thank you so much, Ambassador Saab. I think Ambassador Saab ne bada zabardast explain kar diya, and I think all we need to know about SCO, Ambassador Saab has addressed almost every question. Thank you so much, Ambassador Saab. Sir, it was quite comprehensive. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. Very kind of you. We hope to collaborate with you in future as well, sir. Inshallah. Zarur. बहुत बहुत शुक्रिया दी. Thank you. Khuda Hafiz.